So we will start from optical mineralogy. So optical mineralogy, it is the study of minerals. Under microscope. हमारा जो माइक्रोस्कोप यूज हुए तब बोलते पेट्रोलॉजिकल माइक्रोस्कोप पेट्रोलॉजिकल माइक्रोस्कोप तो पेट्रोलॉजिकल माइक्रोस्कोप को जाए तो which is different from other microscope और माइक्रोस्कोप रे डिफरेंट है ना ताको पोलराइज्ड माइक्रोस्कोप को जाए तो ये पोलराइजेशन हुए और माइक्रोस्कोप स्टडी करते तो विद द हेल्प ऑफ लाइट with the help of light. Light is a form of energy. Light is a form of energy. Basic idea दूसरी light is a form of energy that consists of photons और तो quanta को सकते it consists of photons जोड़ा कि called as small packets of energy. It consists of photons or quanta तक photons or quanta. Light show dual nature also. Light show dual nature. That is, it show dual nature. It has both particle nature and wave nature. अगर इसको क्वांटम मैकेनिक्स से पढ़े थे प्लैंक्स कांस्टेंट सुनते पार्टिकल का पूरा लाइट है डुअल नेचर देखा है it shows particle nature, it shows wave nature. So light, it is a source can be received from sun. जो काम कौन करा electromagnetic radiation. कौन electromagnetic radiation. EMR को जो electromagnetic spectrum को electromagnetic radiation को राइट सन रो आसे तो it consists of different rays, different wavelength of rays consist करची. So in terms of wavelength, सबसे smallest है सो gamma ray, then X-ray. है ना? X-ray. पूरा UV ray. अपने visible ray, infrared. Infrared ray पर ऐसा microwave. तापर ऐसा radio wave. यदि इतना wave रिमोट सेंसिंग में पढ़ाया था तुम्हारा गामा रे एक्स रे यूवी रे विजिबल रे इंफ्रारेड माइक्रोवेव रेडियो वेव सब लार्जेस्ट वेवलेंथ गामा रे सब स्मॉलेस्ट वेव तो ये जो लाइट अच्छी ये मूव करे तो तुम्हें वेवी नेचर है मूव करे तो इट कैन स्प्लिट इनटू टू डायरेक्शन और इट कैन शो टू प्रॉपर्टीज तो लाइट कैन शो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी it can show electric property, it can also show magnetic property. That's why it is called electromagnetic radiation. जेहेतु electric property देखुची magnetic property देखुची था it is called as electromagnetic radiation and its electrical vector and magnetical vector they are perpendicular to each other. सेते टिपर को तुम्हें हायर स्टडीज पढ़िबो तो हमें अभी जानिबा जे जेहेतु we are required only the electric part so we will ignore the magnetic part. हमको खाली इलेक्ट्रिकल पार्ट दरकार टू स्टडी द मिनरल अंडर माइक्रोस्कोप सो हमें इलेक्ट्रिकल पार्ट को भी ही स्टडी करना लाइट इधर ट्रैवल करे वाइब्रेट इन ऑल डायरेक्शन कौन सी थिंग तुम्हारा वाइब्रेट मूव करे वाइब्रेट करो तो पता एग्जांपल लिया तुम्हें पी वेव यदि पड़थिबो पी वेव मूव कला बेले से कौन वाइब्रेट करे
जो डायरेक्शन रे मूव करे ताको पैरेलल करके वाइब्रेट करे कि H2 जितना मूव करे जो डायरेक्शन रे मूव करे ताको परपेंडिकुलर करके वाइब्रेट करे. This is the vibration direction of the seismic waves. Similarly, when light will travel, it will vibrate in all directions. It will vibrate in all directions. That is called omni vibration. ता कौन कहे? Omni vibration. ठीक है. So A basis रे now we will divide the minerals. तो mineral अच्छे तो A basis रे divide कराए. तो light गोटे mineral जो travel करियो, तार से सब direction को vibrate करियो. तार से सब direction को equal amount रो vibrate करियो ना unequal amount रो vibrate करियो. ठीक है. तुम्हें suppose हो रहा कि तुम्हें example लिया. तुम्हें टेबल ऊपर किसी बाली पके दियो. तुम्हें टेबल टाको जोर बाड़ा देले बाली पूरा आपे आपे उठिबे ना नहीं. कम है उठिबे. यानी एतरे से वेव टा ट्रैवल करछि ये पार्टिकल को का करूछि वाइब्रेट करूछि. दैट इज कॉल्ड एज वाइब्रेशन. देखो मन तो कोनोसी सब्सटेंस को ऊपर टेबल ऊपर किछ न रखो ताको सेमिति बाडा ताल भी तमे जानि बे ता भीतर जो मॉलिक्यूल अछि जोडा हम देखि पाबो दे विल वाइब्रेट. हैला सेमिति कोनोसी सब्सटेंस भीतर तले लाइट ट्रैवल करियो ताले से कम वाइब्रेट करियो. हैला जेतो हम राशियो फास्ट कथा होछि कि व्हाट इज आइसोट्रोपिक सब्सटेंस. Isotropic substance and anisotropic substance. तो ये पूरा मैं जानी पड़ते कौन सजेस्ट कर something should be equal. Isotropic. Anisotropic means something should not be equal. Suppose हम गोटे मिनरल नेले जो लाइट एंटर कला करे is vibrating equally in all directions. सब डायरेक्शन में क्या होछ equally vibrate करछ. तो डायरेक्शन तो equally vibrate करछ तथा वाइब्रेशनल पार्ट में यदि जोड़ी दबा हमें कौन है जोड़ सर्कल इज. सो सिंपल वे रे देखिए बोले गोटे लाइट जेतले ट्रैवल करछि गोटे मिनरल रे जदि से सब डायरेक्शन को इक्वल वाइब्रेट करछि दैट इज होछि आइसोट्रोपिक सब्सटेंस. वाइब्रेशन में बुझ पाछो जेतु गोटे सब्सटेंस जेतले ट्रैवल गोटे रे जेतले ट्रैवल करियो गोटे सब्सटेंस भीतर से ताको वाइब्रेट करबा डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द रे. या में जो रे रोचन तदी लाइट रे तो लाइट रे सब्सटेंस भीतर जो से सब डायरेक्शन को तुमको वाइब्रेट कर. यदि सब डायरेक्शन में इक्वल वाइब्रेट हला पार्टिकल पूरा ताले इट इज कॉल्ड एज आइसोट्रोपिक. यदि एमती गोटे पार्टिकल अछि बा मिनरल अछि आ भीतर रे पास कर ताले यदि कौन होछि अनइक्वल वाइब्रेशन देखो मान देखो अनइक्वल वाइब्रेशन देखो तो अनइक्वल वाइब्रेशन देखिबो so that is called as anisotropic substance. तो कौन कहे anisotropic substance. Isotropic anisotropic. So you can write down the isotropic substance are those substance. Isotropic substance are those substance in which light vibrates in equally in all directions. The light or movement through substance it depends upon the strength of the substance. The substance strength upon depend करे. Suppose गोटे substance अच्छी तार सब डायरेक्शन में इक्वल स्ट्रेंथ अच्छी ताल से इक्वल वेलोसिटी शो करे पारे. स्ट्रेंथ इन द सेंस तुम गोटे एग्जांपल दो. सपोज धर तुमे गोटे जगह अच्छा जो जगह रे तुम पाखरे चारटा डायरेक्शन अच्छी ट्रैफिक पाखरे আছে तुम चारटा डायरेक्शन अच्छी. ठीक है यदि चारटा डायरेक्शन में सेम ट्रैफिक थाए ताल तुम सेम स्पीड मेंटेन कर पारे. ठीक है यदि गोटे डायरेक्शन में पूरा एनएच रहला गोटे डायरेक्शन मार्केट रहला गोटे डायरेक्शन ये रहला ताल तुम सेम वेलोसिटी मेंटेन कर परिबो ना.
तो ये आम से स्ट्रेंथ नौ बॉन्ड स्ट्रेंथ जो गोटे सब्सटेंस सब डायरेक्शन में इक्वल बॉन्ड स्ट्रेंथ अच्छी इट विल शो equal vibration. So that's why you can write down isotropic substance has equal bond strength in all directions. Because isotropic substance has equal bond strength and equal development in all directions. तो जेहेतु एटा सब डायरेक्शन रे इक्वल वाइब्रेट करूची आरो जो वाइब्रेशन पॉइंट पर्टिकुलर टाइम रे यदि हमें जॉइन करबा ताले कोन हो सर्कल आउ ताको हम कोन होती वेव फ्रंट आ वेव स्फीयर तो वेव सरफेस तो सुनी दियो वेव सरफेस यदि गोटे आइसोटोपिक सब्सटेंस रो वेव सरफेस नवा ताले इट विल बी ए स्फीयर वेव सरफेस होती 3D रे कंसीडर करा जाए वेव फ्रंट होची 2D रे तब भाबे जे गोटे पॉइंट अछि यदि 3D रे तब भाबे जे सब डायरेक्शन से इक्वल जाउछ माने से कोन प्रोड्यूस करे गोटे स्फीयर ही प्रोड्यूस करिवो तो सेठी एठी जेतु सब डायरेक्शन इक्वल वाइब्रेट करछ इट विल प्रोड्यूस ए स्फीयर तो वेव सरफेस हे जो कोन स्फीयर वेव फ्रंट हे जो सर्कल वेव फ्रंट माने 2D रे ता क्रॉस सेक्शन हो इट विल प्रोड्यूस ए सर्कल. So the wavefront of the isotropic substance is circle and wave surface is sphere. Now we move to crystallography. Crystallography रे तुम जते भी पढिला सिस्टम और सेति ही मिनरल अछन टोटल ता भीतर को सिस्टम रा तुम लागु जे सब बडे इक्वल डेवलपमेंट इतो सब बडे इक्वल बॉन्ड स्ट्रेंथ कोडा आइसोमेट्रिक सब्सटेंस तो आइसोमेट्रिक सब्सटेंस है equal dimensions of direction a1 equal to a2 equal to a3 that is indicating it has also equal strength in all directions. All the isometric substances are isotropic. All the isometric substances are isotropic. For example, you can write down it would include all the isometric system crystal all the isometric minerals जितने भी isometric mineral अच्छे समस्त isotropic behavior देखें. आइसोट्रोपिक सब्सटेंस तुम जेकोसी डायरेक्शन रे लाइट एंटर करा से सब बडे इक्वली वाइब्रेट मतलब एटा आइसोट्रोपिकल एमिति गले भी इक्वल हो जेकोसी डायरेक्शन में लाइट एंटर करा इट विल वाइब्रेट इक्वली इन ऑल डायरेक्शन. द अपोजिट इज तुमरा अनआइसोट्रोपिक सब्सटेंस जोटरे की बॉन्ड स्ट्रेंथ और डेवलपमेंट विल बी अनइक्वल बॉन्ड स्ट्रेंथ और डेवलपमेंट विल बी अनइक्वल. तो वेव फ्रंट सेठी जो कण एलिप्स और wave surface is ellipsoid and जो आउ को मिनरल रहले जो आउ को सिस्टम रहले जाकर ए कंडीशन आस करियो all other systems except isometric are anisotropic. तेणु तुमरा टेट्रागोनल हेक्सागोनल ऑर्थोरोपिक मोनोक्लिनिक ट्राइक्लिनिक सब सिस्टम रा मिनरल एक्सेप्ट आइसोमेट्रिक ऑल आर अनिसोट्रोपिक. So isometric is isotropic others are anisotropic. So optically हम एमती दीटा डिवाइड करें कोन आइसोट्रोपिक अनिसोट्रोपिक जोतर कल आइसोमेट्रिक जोतर a1 a2 a3 आ कोन से a1 a2 a3 ने तेणु ऑल आर अनिसोट्रोपिक. बट अनिसोट्रोपिक सब्सटेंस से तुम एतले हमें कोन आइसोट्रोपिक सब्सटेंस से तुम जे कोनोसी डायरेक्शन में लाइट एंटर करले इक्वली वाइब्रेट करो बट ओटा अनिसोट्रोपिक सब्सटेंस अछि ठीक है ओटा अनिसोट्रोपिक सब्सटेंस अछि देयर आर सर्टेन डायरेक्शन इन एन अनिसोट्रोपिक सब्सटेंस वेयर लाइट विल वाइब्रेट इक्वली इन ऑल डायरेक्शन राइट. आइसोट्रोपिक सब्सटेंसेस जे कोनोसी डायरेक्शन में तुम लाइट एंटर करा से इक्वली वाइब्रेट करियो. अनिसोट्रोपिक सब्सटेंस से there are such directions or direction maybe गोटे थाई पर maybe दिरा तो the light same direction travel करे ताले it will vibrate equal. So write down in anisotropic substance there are such direction along which light will vibrate equally. So this direction is called as optic axis. The optic axis.
This direction is called as optic axis. ଯେକୌଣସି ମିନେରାଲ କୌଣସି ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ସନ ରେ ଯଦି ଲାଇଟ୍ ଇକ୍ୱାଲି ଟ୍ରାଭେଲ କରୁଥିବ ବା ଇକ୍ୱାଲି ଭାଇବ୍ରେଟ୍ କରୁଥିବ ସେ ଡାଇରେକ୍ସନକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଅପ୍ଟିକ୍ ଆକ୍ସିସ୍। ଯଦି ଆନାଇସୋଟ୍ରୋପିକ୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଆମେ ନେଉଛନ୍ତି एंड आइसोट्रोपिक नोचन तुम एटा धर आइसोट्रोपिक हला आइसोट्रोपिक तुम जे कोनोसी डायरेक्शन में लाइट एंटर करले भी सी इक्वली वाइब्रेट करबो देन आइसोट्रोपिक सब्सटेंस रा एनी एक्सिस कैन बी ऑप्टिक एक्सिस आइसोट्रोपिक तो आइसोट्रोपिक हैज इनफिनाइट नंबर ऑफ ऑप्टिक एक्सिस आइसोट्रोपिक केता हो इनफिनाइट बट इज हमें अनिसोट्रोपिक सब्सटेंस देखिबा तार हम ए डायरेक्शन लाइट एंटर करे भी अनइक्वल वाइब्रेट करो ए डायरेक्शन एंटर करे अनइक्वल वाइब्रेट करो तो देयर आर ओनली सर्टेन डायरेक्शन तो तुम एमती एंटर करे भी ताले ये इक्वली वाइब्रेट हैला तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ऑप्टिक एक्सिस अनिसोट्रोपिक सब्सटेंस इज क्लासिफाइड into two types हैला देखो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ऑप्टिक एक्सिस anisotropic substance is classified into two types. One is called uniaxial mineral and one is called biaxial mineral. Uniaxial, biaxial. Uniaxial माने बुझी पाछा there is one axis one optic axis is uniaxial one optic axis is uniaxial যদি দুইটা optic axis হবা যেতে মিনারেল আছে টেট্রাগোনাল হেক্সাগোনাল সিস্টেম র সব জায়গা uniaxial তো আনাইসোটোপিক সবসময় আমরা কইলে টেট্রাগোনাল হেক্সাগোনাল অর্থোরমিক মনোক্লিনিক ট্রাইক্লিনিক তো from which টেট্রাগোনাল হেক্সাগোনাল হবে কোন uniaxial और रेस्ट ऑर्थोरमिक मोनोक्लिनिक ट्राइक्लिनिक एटा हेगले बाइएक्सियल त माने ताकर दुईटा ऑप्टिक एक्सिस अछि ताकर गोटे ऑप्टिक एक्सिस अछि नेक्स्ट कम्स टू रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन इज अ फेनोमेनन वन को बोलते रिफ्लेक्शन तो जानछ लाइट विल incident on a medium and return back to the same medium the incident angle eta reflected angle sin A by sin R equal to sin A equal to sin R है ना नहीं तो I equal to R नहीं diffraction है ले the two types of refraction है this will be N1 N2 so which one will be greater so N2 greater than N1 so when it is traveling from denser to rarer will move away from the normal. That's the basic refraction. So it is simple refraction and reflection. What is double refraction? What is double refraction? So light is a normal substance enter करछि से गोटे रे गोटे रे हिसाब रे ट्रैवल करछि and bend होछि. But in case of mineral, when light will enter into a mineral, that is anisotropic. It is not the phenomenon for isotropic. Isotropic does not show double refraction. Isotropic double refraction show करे नहीं. यदि anisotropic अच्छी माने, when it will enter into the mineral, it will split into two rays. दीटा रे को split कर दे. Suppose that it anisotropic substance. So the light enter करेगा. It will split into two rays like this. दीटा रे को split करेगा. Suppose that तुम्हें काचरे कोनो से जिनिस धर तू चश्मा रे देखु समस्त तो केते देखौ छ गोटे देखाउ छ गोटे से काच जागा रे मोदी तोर कि मिनरल ला गोटे ट्रांसपेरेंट थिंग लगति त सब दीटा देखा तो दुई चारटा देखा हम कोनोसी मिनरल को जदि हमें कोनोसी मिनरल ऊपर पूरे डॉट ऊपर गोटे मिनरल लगला तो मुझे डॉटटा दीटा देखा तो दिस इज व्हिच मोरा कैल्साइट कैल्साइट व्हिच तो हेक्सागोनल सिस्टम क्रिस्टलाइज करे तो कैल्साइट इज anisotropic कैल्साइट कोन anisotropic
कैल्साइट मोस्टली ट्रांसपेरेंट वेराइटी कॉलेज रे देखो यदि कैल्साइट थ्रू रे कौन थिंग को तुम देखियो चेष्टा कर से तुमको दीटा देखा धर मुझे पेपर रे गोटे लाइन जणाई तापर कैल्साइट लिखा है तुम कैल्साइट रखी देखिए तुमको से डबल देखा इट इज बिकॉज ऑफ डबल रिफ्रैक्शन एंड ऑल anisotropic mineral will show double refraction all anisotropic mineral will show double refraction ଯେକୌଣସି ଟ୍ରାନ୍ସପାରେଣ୍ଟ anisotropic mineral को ट्रांसफर करे पहला सब डबल रिफ्रैक्शन शो करे so double refraction it will splits into two rays so write down the light entering into an anisotropic mineral light entering into an anisotropic mineral will splits into two rays will splits into two rays this is called as a double refraction so from the two ray the two ray is called as slow ray and fast ray धीरे रे कौन कहे गोटे कहे स्लो रे गोटे फास्ट रे बिकॉज ऑफ देयर वेलोसिटी तो गोटे कौन स्लो मूव करियो गोटे मूव करियो फास्ट and they will vibrate perpendicular to each other they will vibrate perpendicular to each other अब एटा तो एमिति vibrate करछि this one will vibrate like this so they will vibrate perpendicular to each other understood so these slow ray and fast ray they are called different in case of uniaxial in case of biaxial all anisotropic mineral will show double refraction but they are called different in different type of mineral or in case in uniaxial and biaxial. So first in uniaxial mineral, the doubly refracted ray, uniaxial the doubly refracted ray. In uniaxial mineral, the doubly refracted ray are called as ordinary ray and extraordinary ray. Ordinary ray and extraordinary. Ordinary and extraordinary. Now see, this is a mineral. तो आम मिनेराल दीटा ये सेक्शन कथा कहबा आम कट कर तुम काकुड़ी खाई सब काकुड़ी काटुच गोले गोले करी जो भाव जे दैट इज अ बासाल सेक्शन कौन बासाल सेक्शन सपोज यहाँ गोटे से थिंग अच्छी मुझे कट करी बासाल सेक्शन हम तो बासाल सेक्शन बेसिकली करते परपेंडिकुलर टू द सी एक्सिस सो यहाँ सी एक्सिस को परपेंडिकुलर को कट करी जदि सेटा हम कौन बासाल सेक्शन ताको पैरेलल कट करी जदि सेटा प्रिंसिपल सेक्शन दुटा जिन साइड मेंशन कर गोटे हूँ बासाल सेक्शन गोटे हूँ प्रिंसिपल सेक्शन so basal section perpendicular to c axis प्रिंसिपल सेक्शन आउ दीटा एक्सिस रहले a1 a2 जहाँ को पैरेलल कर गेले चले है प्रिंसिपल सेक्शन होची आइदर पैरेलल टू a1 और पैरेलल टू a2 जेकोनस परे तुमे एमिति काटिले भी हबो एबळा काटिले भी हबो दीटा को आदि प्रिंसिपल सेक्शन so in case of uniaxial mineral the c axis is the optic axis uniaxial mineral कौन था c axis टा ही optic axis always constant in uniaxial mineral और जहाँ भी c axis अच्छी tetragonal hexagonal system में जोटा c axis that is always optic axis so in uniaxial mineral c axis is the optic axis so in uniaxial mineral the extraordinary ray
it vibrates parallel to the C axis. The extraordinary ray, it vibrates parallel to C axis, and the ordinary ray vibrates parallel to A1 or A2. Lekha. The extraordinary ray vibrates parallel to C axis. The mind भलसे रखियो, the extraordinary ray always vibrates parallel to C axis. So the ordinary ray vibrates parallel to A1 or A2. ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହିପାରିବା जोटा एक्सट्राऑर्डिनरी ताको शॉर्ट फॉर्म रे हम ई रे लिखंती. ई रे vibrates in the principal section. को सेक्शन अलगा जे सी को पैरेलल करी कोची सेटा को सेक्शन हबो प्रिंसिपल सेक्शन. काना प्रिंसिपल सेक्शन सबले कट परसेंट पैरेलल टू सी, तो ई रे vibrates in the principal section and O ray vibrates in the basal section. So this is your mineral, this is your basal section. So O ray vibrate in this basal section, either parallel to A1 or A2 or any direction. And this is our principal section. एक ही वाइब्रेट करियो कौन वाइब्रेट ई रे है ना. तो एटा हला प्रिंसिपल सेक्शन. It can be principal section or this can also be a principal section. This is basal section. So E ray vibrates in the principal section, O ray vibrates in the basal section. Uniaxial mineral but biaxial mineral there is not this type of condition. एवला condition किसी नहीं. So biaxial mineral तुम्हें both the doubly refracted ray are called as extraordinary. दीरा को क्या जाए extraordinary को. तार रीजन होच कौन कि ordinary जितने को आजो जितने से रे टा भी सब डायरेक्शन को equal vibrate हो. सेटा केमति हम एटी डिटरमाइन करबा जदि हम गोटे यूनिएक्सल मिनरल बासाल सेक्शन नियो. थोड़ा हम यूनिएक्सल मिनरल को डिफाइन करछन कोन A1 = A2 नॉट इक्वल टू C. ठीक अछि. तो जदि हम गोटे बासाल सेक्शन नउ छथि गोटे मिनरल ताले हम कोन करछन एक्चुअली but just eliminating the C direction. अब C direction को करछन कंप्लीटली एलिमिनेट कर दोछन. तो आम यदि गोटे बासाल सेक्शन नहीं जा तांपारे कौन बचो स्क्वायर रोड बाहर सी डायरेक्शन आउ नथो. सो ई स्क्वायर सब इंडिकेट करे कोन इक्वल डेवलपमेंट. तो गोटे यूनिएक्सल मिनरल तार हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इक्वल डेवलपमेंट हेते वर्टिकल डायरेक्शन हे न अनइक्वल हेते. हॉरिजॉन्टल टू से माने अधिक हेता डेवलपमेंट नले कम हेता. जो जगह रे कंडीशन अछि माने से जगह रे जो भी रे वाइब्रेट करतो से इक्वल वाइब्रेट करतो. बुझो ना. तो आम कहले कि आइसोट्रोपिक सब्सटेंस कंडीशन जोटी आसीओ माने सेटी इक्वल वाइब्रेशन हो. एटी बासाल सेक्शन ता कोन होची इट विल बिहेव लाइक आइसोट्रोपिक. तो जेहेतु बासाल सेक्शन ने ऑर्डिनरी रे टा वाइब्रेट करची तो ऑर्डिनरी रे विल वाइब्रेट इक्वली इन ऑल डायरेक्शन. तो एटा होची सबले मन रखथुवा जदि रे गोटे वाइब्रेट करची इन अ पर्टिकुलर सेक्शन एंड इट इज वाइब्रेटिंग इक्वली ऑल डायरेक्शन दैट इज कॉल्ड ऑर्डिनरी. That is called ordinary ray. Write down ordinary ray vibrates equally in all direction. सब डायरेक्शन को आवा equally vibrate करियो. But extraordinary ray रोची principal section ने तो तार केमिति हबो it will produce this type of thing. ये सेक्शन तार प्रोड्यूस हो जोटा कि अनइक्वालिटी इंडिकेट करछि. So it will produce unequal vibration. तो extraordinary ray का प्रोड्यूस करियो produce vibrate unequally. तो जे इक्वल वाइब्रेट करछ माने तार वेव फ्रंट कोन आइजो सर्कल. तो ऑर्डिनरी रे रो वेव फ्रंट कोन आइजो
सर्कल एक्सटर्नल रे वेव फ्रंट हे जवा एलिप्स हैला ऑर्डिनरी रे वेव फ्रंट हे गला सर्कल एक्सटर्नल रे वेव फ्रंट हे गला कहियो एलिप्स बुझिबेला तो एगुला सब बेसिक जिनस तापर बेस रे तुम यूनिएक्सियल बायएक्सियल मिनरल पढ़ो है तापर लिख दो कि मोर बायएक्सियल मिनरल ले both the both the मोर ए परिबा bifurcated sorry both the splitted ray तुम कह परियो both the doubly refracted ray कह परियो हैला so in biaxial both the doubly refracted ray both the doubly refracted ray are called as are extraordinary are extraordinary okay so it is more of double version तो जदि दीटा रे तमे नउचो ई रे ओ रे मेन तामर इनिशियल प्रॉपर्टी होची वन ऑफ देम कैन बी स्लो रे वन ऑफ देम कैन बी फास्ट तुमको जते डबल रिफ्रैक्शन फेनोमेनन कथा कुआ जीवो सबले मन रखिबो कि कोनोसी मिनरल भितरे जदि लाइट एंटर करूची ताले इट विल स्प्लिट्स इनटू टू रेज एंड दोज आर कॉल्ड फास्ट रे एंड स्लो रे ऑलवेज is not always called as ordinary external. Only case of uniaxial it is called as your ordinary external. In a biaxial case there is no such direction. Biaxial is orthorhombic monoclinic triclinic. So कि सबुले A is not equal to B not equal to C. तो सेठी किछि सेमति कंडीशन आछने जोथरे कि इक्वल सेक्शन तमे ओडे पाइबो आ वाइब्रेशन इक्वल हम सेतमे सबुले इन ऑल केसेस biaxial में or are extraordinary. पे general sentence में double refraction को represent करछथि then when light will enter into the mineral it will split into two rays दीटा रे को split करे है ना and one of them is fast ray one of them is slow ray and another thing they should they will vibrate mutually perpendicular to each other so ray enter करिवो दीटा रे को split करिवो they will vibrate mutually perpendicular to each other one of them is slow ray one of them is fast slow ray fast ray in the basis on the basis of velocity determine कर परबो लाइट रो कोन डिस्टेंस ऑफ टाइम डी केते टाइम नो से मिनरल को कोन पास करिए को केते तारा मिनरल डिस्टेंस अछि ताको नै तो वेलोसिटी काट परबो लाइट वैक्यूम रो वेलोसिटी लाइट रो केते